Okay, beta. So we are going to start today's discussion. In last class, we left our discussion at mechanism of electrophilic substitution reaction. So electrophilic substitution mechanism. Electrophilic substitution. Beta, electrophilic substitution reactions in your syllabus happens for benzene. Okay. So its mechanism is under discussion today. So beta, examiner will give you a chemical reaction. And according to reaction, you have to craft the mechanism. So suppose reaction is chlorine and benzene. They are the reagents, they react. The catalyst is AlCl3 in heat conditions. And the product is chlorobenzene and HCl. These are the two products, beta. Now to craft mechanism, beta, the first thing is production of electrophile. That how electrophile will be produced. Production of electrophile. Now, beta, this production of electrophile is part of the mechanism. Okay, electrophile को produce करना is part of the mechanism. So what happens initially? This catalyst AlCl3 reacts with this reagent Cl2. Okay, the catalyst and the reagents they react together. और reagent भी Cl2 है, catalyst AlCl3 है. तो इससे AlCl4 negative plus Cl positive will be produced. Keep this equation in mind. This Cl positive is electrophile. So पहले stage में electrophile is produced. And you need to know this equation as part of reaction mechanism. Now you will be wondering कि ये AlCl4 negative कैसे produce हुआ और Cl positive कैसे produce हुआ. So for that, beta, just think how many valence electrons are present in Al. Valence electrons in aluminum are how many? So we know that aluminum has 3 valence electrons like this. Or AlCl3 में each electron of aluminum shares 1 electron with 1 electron of Cl. I'm just making electrons of Al, okay? क्योंकि मैं Al में इंटरेस्टेड हूँ बेटा. Cl के इलेक्ट्रॉन्स डॉट एंड क्रॉस में बनाने चाहिए, मैंने यहाँ नहीं बनाए. अब ये देखें, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो इट्स शेल इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट. So the shell is not complete, okay? Aluminum has 6 valence electrons, okay? 6 valence electrons are there for aluminum. So shell of aluminum is not complete. Now what happens, ये जो shell complete नहीं है, इसकी वजह से this chlorine molecule is the other reagent. So ये जो bond है chlorine का, this will break heterolytically. Heterolytic जब bond break होगा तो we get Cl negative and Cl positive, right? अब जो ये Cl पॉजिटिव फॉर्म हुआ है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, राइट? ओके. और जो ये Cl नेगेटिव फॉर्म हुआ है, Cl नेगेटिव हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं Cl नेगेटिव के. So what this Cl negative will do? Al needs 2 electrons, so dative bond will be formed here. ये जो ACl है, it will make a dative bond here. तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो वन साइडेडली शेयर होंगे. सो व्हाट हैपेंस बेटा, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा AlCl4 नेगेटिव and the other thing is this thing, electrophile. So this electrophile is the other thing which is formed here. So that is why I wrote the products. किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? You can ask question. नहीं सर. Cl3 से Cl2 जब रिएक्ट हुआ तो ये बेटा फॉर्म हुआ.
अगर आपको इस बैकग्राउंड डिटेल का नहीं पता तो इट्स ओके, जस्ट मेमोराइज द इक्वेशन, ओके। तो अब स्टेज वन में व्हाट हैपेंस के प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा स्टेज वन में जस्ट लुक, AlCl3 was the catalyst, ये रिएक्ट हुआ किससे, Cl2 से। And this equation is important equation beta. It makes AlCl4 negative plus Cl positive. And this Cl positive is electrophile. Okay? तो पहले electrophile produce हुआ. And this equation is important equation beta. Okay. Now what happens in next phase? जब electrophile produce हुआ तो now we have benzene. This is benzene with delocalized pi electrons, and this is electrophile Cl positive. So what happens step one में and what happens step two में? अब बेटा this benzene के जो pi electrons हैं, there are 6 pi electrons in benzene. तो 6 pi electrons में से 2 pi electrons will attack here and the ring will be ruptured. Benzene ring will be ruptured because benzene ring is because of 6 pi electrons, और अब 6 pi electrons नहीं हैं, 6 में से 2 electrons Cl को अटैच करवा देंगे यहाँ बेंजीन पे. What happens due to this attack? Cl will be attached here. वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स में से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ बॉन्ड पेयर बन गए, राइट. एंड इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी अटैच है. दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट. Now beta benzene is stable due to its pi bond. So benzene has to recover its pi bond. Benzene recovers its pi bond. Recovers its pi bond. Why? Because benzene is stable because of its pi bond. Because benzene is stable due to its pi bond. तो बेटा pi bond recovery के लिए what happens? This carbon hydrogen bond will break. After the intermediate, what happens? This carbon hydrogen bond will break and the 2 electrons from carbon hydrogen bond will shift towards benzene ring so that benzene ring is recovered. So look here, after this step 2, the ring is recovered and Cl is attached here and carbon hydrogen bond breaks producing hydrogen ion. So hydrogen will be produced as hydrogen ion like this. Okay. And now beta in third part, what happens? Third part में recovery of catalyst के लिए आप इक्वेशन लिखोगे. Recovery of catalyst. तो वो कैटलिस्ट का क्या बना? कैटलिस्ट तो AlCl3 था जो कन्वर्ट हुआ था AlCl4 नेगेटिव में. तो व्हाट टू डू फॉर दैट कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट बेटा ये जो H प्लस प्रोड्यूस हुआ है, ओके, दिस H प्लस, ये वाला H प्लस बेटा मैंने यहाँ लिखा है, राइट. दिस H प्लस इट रिएक्ट्स विथ AlCl4 नेगेटिव, ये वाला बेटा AlCl4 नेगेटिव मैंने यहाँ लिखा है. एंड व्हाट हैपेंस, ये जो H प्लस है ये Cl4 नेगेटिव से HCl फॉर्म करेगा एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज AlCl3, जिसको हम बोलेंगे कैटलिस्ट रिकवर्ड. दिस इज हाउ कैटलिस्ट रिकवर्ड. देखो ये AlCl4 नेगेटिव आप ऊपर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, लुक बेटा हाउ दिस AlCl4 नेगेटिव प्रोड्यूस्ड लाइक हियर. So beta, you notice this thing? This Cl negative made a date bond with AlCl3 और जब वो H प्लस प्रोड्यूस हुआ था तो वो H प्लस आके इस Cl नेगेटिव को पिक करता है, HCl बना लेता है और कैटलिस्ट रिकवर हो जाता है. आई होप कि समझ आ गई होगी बेटा. If anyone has doubt, you can ask for this question, beta. This is नहीं सर. beta.
If you have any question, you can ask. I can trace another mechanism बेटा, so that दूसरा mechanism बेटा देखें. For example, this is reaction. Examiner will give you reaction, and you have to trace mechanism in accordance with the given reaction. Like nitric acid, say when benzene reacts, and sulfuric acid happens to be the catalyst, and the pressure happens to be 55 degrees Celsius. What product beta we get? We get nitrobenzene and water. Now, इस reaction का mechanism कैसे trace करना है? How would you make mechanism for this reaction beta? तो वही बात है कि मैकेनिज्म में जो पहला स्टेज है वो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है. प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. सो यू नीड टू नो कि हाउ इलेक्ट्रोफाइल इज प्रोड्यूस्ड. तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है दिस नाइट्रिक एसिड HNO3. इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन सल्फेट आयन प्लस वाटर प्लस NO2 पॉजिटिव. अब ये जो NO2 पॉजिटिव है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. This is electrophile. And this equation is also very important equation in terms of exam. Now you will be wondering how the products are made. So beta, what I taught in the class, you can take this nitric acid. You can take this nitric acid like this, HO and NO2. And beta, this sulfuric acid, can we dissociate this sulfuric acid like this, H plus and HSO4 negative? Sulfuric acid can dissociate like this. We know that sulfuric acid is proton donor, so proton is donated and the other ion is the HSO4 negative ion. So what happens beta, this is partial negative and this is partial positive. This bond, ये ON वाला bond breaks heterolytically. तो जब ये bond heterolytically break होता है तो we get OH negative ion, NO2 positive ion. The other ions are H plus and HSO4 negative. Now what happens this OH will pick this H positive and it will produce water, which I have written here. Does it make sense, beta? The other thing, beta, is this NO2, which is electrophile, and I have given this electrophile here. And this HSO4 negative is given here. So if you don't want to go into this detail, just memorize this equation. Okay, nitric acid and sulfuric acid react and produce this thing. So this equation is the equation which is giving us electrophile, right? So now beta, once again, I'm going for the mechanism. Yes, the mechanism is the the first stage is production of electrophile. So what happens is nitric acid, just tell me beta, what products we get. This nitric acid is reagent and sulfuric acid is catalyst. They react together, and what we get hydrogen sulfate ion from sulfuric acid, we get water, and we get NO2 positive. This NO2 positive is electrophile. NO2 positive is electrophile. Now, beta, then benzene, since electrophile is produced, so now benzene will come into action. So what happens? The pi electrons of benzene will attack the electrophile. These pi electrons attacking the सर electrophile. आपकी आवाज कट रही है. बेटा मैं बताएं कहाँ से कट रही है, क्योंकि यहाँ स्कूल में इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल है. फिर आई रिपीट, कहाँ से रिपीट करूं बेटा? सर इसके
ये वाला सर क्लियर? ये वाला पॉइंट जो भी आप कर रहे थे, ये स्टेप 2। क्लियर? ये क्लियर है, ये वाला जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है? जी सर। ओके, तो इसी को मैंने रिपीट किया बेटा। ये पहली इक्वेशन ऊपर मैंने एक्सप्लेन की भी है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ है। एंड नाउ अब बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन होना है। दिस इज स्टेप वन बेटा ऑफ बेंजीन मैकेनिज्म। एंड व्हाट हैपेंस के पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे, तो रिंग विल बी रप्चर्ड बेटा। Ring will be ruptured, and what happens? This NO2 will get attached here. और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां इस बॉन्ड में आए हुए हैं। जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, और इसी पॉइंट पे एक हाइड्रोजन भी है। राइट? सो बेटा बेंजीन इज स्टेबल ड्यू टू इट्स पाई बॉन्ड। सो बेंजीन अपना पाई बॉन्ड रिकवर करेगा हर हाल में। तो अपने पाई बॉन्ड रिकवर करने के लिए व्हाट हैपेंस कि बेंजीन इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स बेंजीन, सो दैट के बेंजीन का पाई बॉन्ड रिकवर हो जाए। वो रिकवर हो गया है। अब नाइट्रो इधर अटैच हो गया है बेटा। एंड दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि ब्रेक हुआ है तो उससे H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा। नहीं, ऐसा- ठीक है। ये H प्लस आयन प्रोड्यूस हुआ, राइट? ना बेटा स्टेज 3 में प्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट, हमने रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट बेटा बतानी है। क्या बतानी है? रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट बतानी। तो रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट कैसे होगी? दिस H प्लस जो प्रोड्यूस हुआ है, ये वाला H प्लस बेटा, और ये जो HSO4 था बेटा ऊपर, HSO4 नेगेटिव, दे विल कंबाइन टुगेदर। What they will produce? They will produce H2SO4, which is catalyst recovered, right? So catalyst recovered here, and but that I think that is what we have. ये बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इस तरह से ट्रेस करने। सर